Hey everyone, welcome back to the channel. Today's video is actually requested by one of you. So I thought let's make a clean and simple configuration video for you. What is inter-VLAN routing? So inter-VLAN routing means routing between different VLANs so they can communicate. So VLANs create different broadcast domain. Okay, so that's why they cannot communicate with each other. To allow communication between VLANs, we need inter-VLAN routing. Okay, so there are two methods for inter-VLAN routing. With the help of router, you can do router on a stick, and with the help of layer 3 switch, SVI method. What is an SVI? So SVI stand for switch virtual interface. Okay, it is a virtual interface on a layer 3 switch. So SVI act as a default gateway for that VLAN. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट होता है फॉर ईच VLAN. ठीक है, और उस VLAN में जितने भी PCs कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ये स्विच है, VLAN है, तो यहाँ पे एक VLAN है जिसमें और भी PCs है. तो इस वाले PC पे जो भी गेटवे होगा वो होगा SVI. लाइक VLAN 10 इंटरफेस VLAN 10. अगर VLAN 20 है तो उस पर इंटरफेस VLAN 20. So these are the SVI, switch virtual interfaces. So why do we use SVI? A layer 3 switch can do both switching and routing in a one device. Instead of sending packets to the router, the switch itself routes the packet. And how does it route? With the help of SVI. It is a high-speed inter-VLAN routing, and multiple SVI can be created. We can create multiple switch virtual interfaces and no physical routing interface needed. Alright, let's see how SVI is configured on layer 3 switch. So let's jump into packet tracer and configure everything step by step. So in the topology, we have one layer 3 switch. Okay. And one access switch. Okay, and three PCs. So we are creating three VLANs. Now we have to create VLANs. So go to layer 3 switch, command line interface, and enable configuration terminal, VLAN 10, then name it sales, exit. VLAN 20, name HR, exit. VLAN 30, name IT, exit. Okay, तो यहाँ पे VLANs क्रिएट कर दिए हमने. Then go to access switch, command line interface, enable configuration terminal. तो यहाँ पे हमें VLAN 10 name sales, exit. VLAN 20 name HR, exit. VLAN 30 name IT, exit. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, VLANs क्रिएट कर दिए.
So now go to switch. तो अभी हमें एक्सेस पोर्ट असाइन करना है, ठीक है। इंटरफेस FA01 switch port mode access switch port access VLAN 10, ठीक है। तो ये वाला पोर्ट जो है VLAN 10 के लिए। नाउ इंटरफेस FA02 switch port mode access switch port access VLAN 20, interface FA03 switch port mode access switch port access VLAN 30, exit. Then अब यहाँ पे हमें लेयर 3 स्विच पे जाना है, ठीक है। लेयर 3 स्विच पे हमें SVI कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो SVI क्या होता है? स्विच वर्चुअल इंटरफेस होता है, ठीक है। स्विच वर्चुअल इंटरफेस जो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह काम करेंगे यहाँ पे ईच VLAN के लिए। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? इंटरफेस VLAN 10, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा IP एड्रेस। तो दिस इज द डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर VLAN 10। इसके साथ यहाँ पे सबनेट मास्क, ओके। हमें इसको नो शट डाउन करना है और एग्जिट। तो ऐसे ही VLAN 20 के लिए यहाँ पे SVI क्रिएट करना है, उसको IP एड्रेस देना है क्योंकि यही डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा VLAN 20 के लिए। ज़ीरो, नो शट डाउन, एग्जिट, इंटरफेस VLAN 30, IP एड्रेस 92.168.30.1, नो शट डाउन, एग्जिट, ओके। तो यहाँ पे हमने SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर दिया है फॉर ईच VLAN, ठीक है। VLAN 10 के लिए अलग से एक डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा, VLAN 20 के लिए अलग डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड 30 के लिए अलग। तो इसके बाद हम इसको राउटिंग जो है लेयर 3 स्विच पे हमें राउटिंग को इनेबल करना है। तो कैसे करेंगे? IP राउटिंग, इस कमांड के थ्रू यहाँ पे राउटिंग इनेबल हो गया, एग्जिट। And the last thing we have to do it here is हमें इस वाले पोर्ट को ट्रंक पोर्ट कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये कौन सा वाला पोर्ट है? गीगाबिट 01, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस G01, इसको हमें करना है स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक, एक्सिट। तो यहाँ इस एक्सेस स्विच पे भी हमें ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, इंटरफेस 01 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, एक्सिट। सो
At the last, go to your PC and assign the IP addresses 192.168.10.10 और जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था जो हमने SVI पे कॉन्फ़िगर किया था वो था 10.1. ठीक है, one 192.168.30.10 192.168.30.1. Okay, so at the last switch 3 पे जाना है, exit exit enable. तो यहाँ से हमें पिंग करना है VLAN पे, पिंग 192.168.10.10. Let's see ping होता है नहीं. Yes, ping is successful. Now ping VLAN 2. Then VLAN 3. Yes, pings are successful here. Now let's see या आपस में communicate कर पाते हैं नहीं. Yes, replies are coming back, so pings are successful here. Now VLAN 2, VLAN 20. Yes. At the last, don't forget to save your configuration. Copy, running or fix to startup config. And that's complete the full configuration of Inter-VLAN routing using SVI on layer 3 switch. This video was made because one of you asking this question in the chat. So keep asking. I love making videos based on your doubts. Thanks for watching and see you in the next video.